Okay. Am I audible and clearly visible? Yes, sir. Yes, sir. So let me introduce myself first. I am Prasant Kumar Sahu and I am a lecturer in zoology at Kendrapada Autonomous College. Okay. So the topic assigned to me is evolution. Okay. And that is evolutionary change, natural selection, then the species concept, process of evolutionary change. Wait a minute. Process of evolutionary change and macroevolution. These are the four units assigned to me. So as you all of know that in this brief amount of time, that is in 45 minutes, it will be very difficult to cover up all the assigned topic. Okay. So we will go through one by one, and as this is the first class, I will go a little bit slower. So if you have any doubt in the meantime, you may ask. Okay. And one more request, please send your enrollment number uh, in the chat box. Okay, please send your enrollment number in the chat box. In that way, it will be recorded. Your all the enrollment number will be recorded online automatically by the computer. Okay. तो आरंभ करिए. So let me first start about the species. Okay. So as you know, here you have here in the picture, figure 24.2, you have six faces, six different looking faces. So diversity within a species. We have different faces. We have different faces, but still we are the same species. Here is another example. Similarity between different species. These two species are different, but they look alike. Okay, so how can we know that these are the two different species and these differently looking people are of same species? Okay, so this is the question. So the answer is biological species concept. Okay, these are two different species because they cannot interbreed. As per the biological species concept, if the species cannot interbreed, they will form different species, whereas these are six different individual. They look different, but they are same species because they can interbreed and produce viable offspring. So the biological species concept says that a species is a group of population. A species is a group of population whose members have the potential to interbreed in nature and produce viable fertile offspring. Okay, but do not produce viable fertile offspring with the member of other such group. So this is very important. As per the biological species concept, if two individual or members of a population has the potential to interbreed in nature, they will interbreed in nature and will also produce viable fertile offspring, but they cannot produce the viable and fertile offspring with members of such other group. So these two cannot produce viable offspring when they interbreed in nature. If at all they can interbreed, their offspring will be not viable. Firstly, they cannot interbreed in nature. If the different uh, member of different populations can interbreed, if there will be a viable population, then only they can be considered as one single species. Otherwise, they will be different species. Okay. So species means species is Latin for kind or appearance. If there are two kind of people, then it is two different species. Okay.
आमे स्पीसीज कहूजे काहाकू ना जेतिकी वेराइटी सेतिकी स्पीसीज मुंडा भाषा रे जेतबे बुझा होजी स्पीसीज माने कोन टू वेराइटीज माने टू स्पीसीज थ्री वेराइटी लाइक थ्री स्पीसीज ओके बट एई केस रे देखो एई केस रे सिक्स वेराइटी पीपल बट दे आर फ्रॉम ए सेम स्पीसीज ओके तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कांसेप्ट एक्सप्लेन करछि सेटा बायोलॉजिकल स्पीसीज कांसेप्ट कहूछि जे अलग अलग देखा जाउतले भी जदि से माने इंटरप्रेट करि परछन्ते वायबल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करि परछन्ते ताहले से माने गोटे स्पीसीज रो बोली धरा हेबे ओके समान देखा जाउतले भी जदि से माने वायबल ऑफस्प्रिंग नेचुरली रिप्रोड्यूस करके तयारी करि पारु नाहंती ताहले से माने अलग अलग स्पीसीज रे गणा हेबे तो एटा हला बायोलॉजिकल स्पीसीज कांसेप्ट बट बायोलॉजिकल स्पीसीज कांसेप्ट सबुटी लागू होई परिबो नाही ओके बायोलॉजिकल स्पीसीज कांसेप्ट बेस्ड करछि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन उपरे दे मस्ट बी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड okay then only species will fall okay तो नेक्स्ट हम लिमिटेशंस गुडा का देखि दवा बायोलॉजिकल स्पीसीज कांसेप्ट रो लिमिटेशंस गुडा को देखि दवा जे बायोलॉजिकल स्पीसीज कांसेप्ट there is no way to evaluate the reproductive isolation of fossil okay when we study fossil we cannot use biological species concept to evaluate how the species were reproductively isolated from one another okay and also it doesn't apply to organisms that reproduce asexually or asexually all or most of the time such as prokaryote okay as because biological species concept is based on reproductive isolation organism that cannot reproduce sexually that do not reproduce sexually and they reproduce asexually we cannot apply biological species concept to them such as prokaryote okay prokaryote or bacteria can transfer genes among themselves so we cannot apply biological species concept to organisms that can reproduce asexually by gene transfer. Furthermore, biological species concept are designated by the absence of gene flow, but there are many pairs of species that are morphologically and ecologically distinct and yet gene flow occurs between them. This is very important. So there are two bear, one is grizzly bear and one is polar bear. They look different. This one is the grizzly bear, this one is a polar bear. Okay, North American species, এটা North American উপরে pool area রে রয়েছে polar bear. The heaviest land carnivore is the polar bear. But they can reproduce and produce viable offspring in the nature. Okay. अच्छा जो माने नुआ आछंती से माने चैट बॉक्स रे रोल प्लीज एड योर रोल नंबर मु कहि दउची रोल नंबर टा कोठू आरंभ होईची ओलिवा जेना कोठू आरंभ होला रोल नंबर टा ओलिवा सबरी रूपाली सचिन राजश्री मंगलमय कविता सुचिस्मिता अनुराधा देवस्मिता अरविंद देवस्मिता मीनाक्षी एंड मोनालिसा एतिकी रोल नंबर पठेचंती बाकी अन्य माने रोल नंबर टा एनरोलमेंट नंबर टा ऐड कर दियंतु सो एठी पोलार बेयर केस रे एठी अलगा अलगा देखा जाउछंती स्टिल दे कैन produce a viable offspring but they are not the same species आमे जोटा कहउतले जे जदि viable offspring तयारी कर दउची ताहले these two members will be treated as a single species किंतु एई केस रे सेटा applicable होनी so this is an exception okay polar bear is a different species and grizzly bear is a different species still they can produce viable offspring in the nature
Okay, so these are the limitations of the biological species concept. That's why there are other species concept also. Species concept माने हमें species को केमिति define करूँ. Okay, तो species को हमने साधारण भाव में हमें बुझुचु one form of life, one variety of life. किंतु biological species concept रा में जेतु limitations देखी सलेन, we will also move to another kind of species concept, morphological species concept. This is the most widely used species concept. Morphological species concept है morphology basis रे species गुड़ा को समान ना अलग सेटा को से distinguish करियो. Okay, so as polar bear looks different from grizzly bear, these are two different species. एमानों को दीटा अलग अलग species बोले कि धरा होची as per morphological species concept. Okay, तो morphology जदि बदली गला, outer appearance, body shape, structural features जदि बदली गला, हमें ताको अलग अलग species बोले धरी नेबा. Okay, the morphological species concept can be applied to asexual and sexual organism. यार जो limitations थिला biological species concept यार से जिंस नहीं. एटा sexual and asexual reproduce organism मानकर भी व्यवहार करी हो. It can be useful even without information of the extent of gene flow. Gene flow जानिबा दरकार नहीं. जदि अलगा अलगा देखा जाउछंती ताहले अलगा स्पीसीज बोली धन्यवाद. जीन फ्लो कहले माने कोन, जीन टा फ्लो होची गोटिए माने जनरेशन टू आउट जनरेशन जीन फ्लो हला एटा. हम एटा को रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस कला माने जीन फ्लो हला धरा होची. ओके, एटा गला हमरा मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कांसेप्ट. इट इज बेस्ड ऑन बॉडी शेप एंड अदर स्ट्रक्चरल फीचर्स और आउटर अपीयरेंस. देन इकोलॉजिकल स्पीसीज कांसेप्ट. Okay, ecological species concept defined a species in terms of an ecological niche. This is very important. Ecological niche, the sum of how members of a species interact with the living and non-living parts of the environment. Okay, how an organism is interacting with the living and non-living part of the environment. On that basis, we will differentiate one group of organism at one species from the another. For example, two species of a particular tree might differ in their size and in their ability to tolerate dry condition. Okay, yet still occasionally interbreed. Okay, because they occupy different ecological niches, those trees should be considered separate species even though they are connected by the gene flow. This is very important. If the two species are in two different habitat and they have different requirements, okay, they function differently in different environment. Suppose two species of mango tree, they are in different environment and they function differently. Okay, their requirements are different. Okay, तो जदि से माने रिप्रोड्यूस भी करूछंती ताहेले भी हमें ताको अलग अलग स्पीसीज हमें कहिबा. Okay, as because they occupy different ecological niche. Ecological niche कहला माने कोन बुझिजो ता sum total of the requirement of a plant. को भलिया जगह रहउजी, केते टेंपरेचर दरकार, वाटर कंडीशन कोन हेथिबा दरकार, सॉइल कंडीशन कोन हेथिबा दरकार, केते लाइट दरकार. तो ये सब को हमें नेकी इकोलॉजिकल निच कहूछु. ओके, the sum totality of the requirement of a plant or of an organism. तो जदि दीटा प्लांट रो रिक्वायरमेंट अलग अलग अछि, दीटा प्लांट हैबिटेट अलग, तांकर फंक्शंस अलग, तो से माने जदि इंटरप्रेट करूथिले बी से मानको हमें अलग अलग स्पीसीज बोली कहबा. Because they have different ecological requirements, ecological niche. Okay, then phylogenetic species concept. Phylogeny माने you must have been known, it was a descent सहित माने ancestor and next generation सहित related phylogeny. Okay, it's defined a species as the smallest group of individuals that share a common ancestor. Smallest group of individuals that share a common ancestor. On that basis, the species will be identified. Okay, so if the smallest group of individual if they share a common ancestor
and they will form one branch of tree, one branch in the tree of life. They will be regarded as one species. Okay. So biologists trace the phylogenetic history of a species by comparing its characteristics such as morphology and molecular sequence with those of other organisms. So phylogenetic species concept also relies on morphological and molecular data, okay, to distinguish one species from another species. So phylogenetic species concept is based on evolutionary descendant. Okay. ଏତିକିରେ କିଛିଟା ଡାଉଟ୍ ରହିଲା, any doubts? किछिटा डाउट्स रहला जे यू मे आस्क, काहे कि जो रेट रे जो स्पीड रे पढौची धरिबाटा मुश्किल हबो. प्लीज वन और टू क्वेश्चंस. तापर हमें आगो को जीवा नहले बुझी होची ना नहीं. यदि डाउट्स अच्छी यू मे आस्क or else you may write in the chat box. Oliva, Anuradha, Aurobindo. Yes, sir. If you have doubts, you may ask. No doubts. And there is no need to fear. जो जिनसोटा जानी ना, please ask. Because मैं भावु जी किछि ना किछि तो doubt थिबो. Okay. If the doubts nahi, let's move to another part. Reproductive barriers. Okay. So reproductive barrier is the basis of the biological species concept. Biological species concept रे हमें देखिले जे there has to be a reproductive isolation. Okay, group of organism must or should be isolated reproductively, then only two species will form. Okay, without reproductive isolation they will be considered as a single species. If there is reproductive isolation, then only they can be considered as two different species. So reproductive barrier what is pre-zygotic barrier, zygote theory haba purbaru, what are the barriers? Okay, and I would also post-zygotic barrier. Post-zygotic barrier, after fertilization zygote will be formed, then what are the barriers? Okay, what are the barriers or what are the isolating mechanism? हम देखिबा habitat isolation. आज मो स्क्रीन शेयर है जी तो. हाँ सर. Okay. प्रथमटा हला habitat isolation. Okay, so if habitat is different, then there is less chance then the two species will meet and mate. Okay, so two species that occupy different habitats within the same area may encounter each other rarely. So this is important. They will encounter each other rarely, if at all, even though they are not isolated by obvious physical barriers such as mountain ranges. So if they live in the same area but in different habitat, then there is less chance that they will encounter each other. Okay, so the example is these two snakes, even though they live in the same geographical area, but they have different habitat. They live in different conditions. Primarily one is a land animal and another is a water animal. Okay, it lives in water, it lives in land. So gradually, eventually,
they will be isolated reproductively because they live in two different habitats. As there is a physical, I mean, there is a habitat difference in the habitat. They will gradually, there will be gradually reproductive isolation in the two group of animal, and they cannot interbreed eventually. Okay, so अलगा अलगा एरिया रे रहउचंती, धीरे 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 ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବା ବନ୍ଦ କରି ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜିନ୍ ଫ୍ଲୋ ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, and as a result they will be considered as two different species. ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଉ ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିପାରିବେନି. Okay, then temporal isolation. Biology ରେ temporal ଲାଗେ ମାନେ ଜାଣିବ, it is related to time. Spatial ଲାଗେ ମାନେ ଜାଣିବ, it is related to space or area. So temporal is time, spatial is space. So temporal isolation, species that breeds during different time of a day, different season or different years, cannot mix their gametes. Okay, जदि ब्रीडिंग सीजन टा बदली गला, ओके, ताहले से माने तांको भितरे मेटिंग होबो नाही, तो जीन फ्लो टा बंद हे कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन तयारी हे जबो, ताको हम कहू छु टेम्पोरल आइसोलेशंस. ओके, एट नॉर्थ अमेरिकन स्पीसीज रो देछि, बट as many as examples गुडा तुम नहीं परिबो. डॉग्स ले तो गोटे स्पीसीज रो ड्रॉप सपोज श्रावण मास रे ସେମାନେ रिप्रोड्यूस करछंती, बिकॉज़ दे आर कंपल्सिव बिहेवियर. ସେମାନେ ଆମ भलिया नहंती जे हमरो थ्रू आउट द ईयर रिप्रोडक्शन होची ह्यूमन मानकर, बट एनिमल्स मानकर कंपल्सिव बिहेवियर. सेमानकर ब्रीडिंग सीजन आसिले, ब्रीडिंग सीजन जनकर ब्रीडिंग सीजन जदि आ गुटे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रो ब्रीडिंग सीजन तो अलग अलग, ताले ऑब्वियसली सेमाने तांका भीतर ब्रीडिंग होबो नाही. Okay, so that is known as temporal isolation. Then behavioral isolation. Behavioral isolation एटा गोटे गैलापागोस आइलैंड रो गोटे चढ़ई ब्लू फुटेड बुबी कहा हुए. चढ़ई को एटा जेतो ब्लू फुट अछि, ताको ब्लू फुटेड बुबी कहा अछि गैलापागोस आइलैंड रे. ओके, तो ए कोन होछि behavioral isolation. जदि गोटे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बा गोटे इंडिविजुअल रो बिहेवियर डिफर कर जाउछि आउट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू, तो तांको भीतर जो बैरियर टा क्रिएट हे जाउछि, दैट इज बिहेवियरल आइसोलेशन. बिकॉज़ स्पीसीज कैन आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म विथ देयर बिहेवियर. ओके, यदि बिहेवियर बदली गला, ताहले से माने भाबिबे जे एटा अलग स्पीसीज रो. कोर्टशिप रिचुअल्स दैट अट्रैक्ट्स मेट्स. कोर्टशिप रिचुअल्स माने मीटिंग पूर्व बर्ड्स मानकर एलाबोरेट कोर्टशिप रिचुअल्स, माने डांस करिवे, सिंग, विभिन्न वॉइस करिवे, ताको हम कोर्टशिप रिचुअल कहू छु. मानाकिन गोटे बाड़ माने माने दी जण डांस कले जे फीमेल हां कहियो, दी जण मेल जदि डांस करूछंती, देन फीमेल तक ऑब्जर्व करिवो, देन ओनली शी विल चूज हर पार्टनर. एटा को कोर्टशिप रिचुअल कहू छु. Courtship ritual that attract mate and other behaviors unique to the species are effective reproductive barrier. Okay, so courtship rituals देखी की से माने identify करूछंती जे you would belongs to the same species or should I mate with him. Okay, so even between close related species, courtship rituals are even between closely related species very unique. Okay, such behavioral rituals enable mate recognition, a way to identify potential mate of the same species. So this is behavioral isolation. In behavior changes, then there will be no transfer of gene or reproductive isolations will develop due to difference in the behavior. Then if all these are same, okay, there is no issue with the behavior, there is no issue with the timing of the reproduction, and there is no issue with the habitat business. They are all in one place. If they have a single breeding season, and they have no problem with the behavioral aspect, then there will be
attempt in the mating. Okay, individual of different species will attempt to mate. Then mating is attempted, but morphological differences prevent its successful completion. They may attempt to mate, but if there is morphological differences in the reproductive parts, okay, reproductive parts of the male and female, then they are said to be mechanically isolated. Okay, so these are the two example. Their genitalia will not complementary, so they cannot mate. They can take an attempt, but as because they have different genitalia and they are not complementary to each other, they cannot mate. They can attempt mating, but they cannot successfully mate. So this is mechanical isolation, as because they have different body parts. Then gametic isolation. Gametic isolation, sperm of one species may not able to fertilize the egg of another species. This is known as species specific recognition. Okay, so if the sperm has a sperm or ovum or gametes, they will, has the property of species specific recognition. They will only recognize the gametes from their own species. Okay, so the biochemistry of gametes are such that they cannot recognize gametes from other species. Okay, तो जदि भी मेट करी गले अलगा अलगा जदि मेटिंग एपारेटस थाई कि रिप्रोडक्टिव एपारेटस थाई कि से माने जदि मेट भी करी गले ताहले भी गोटे स्पीसीज रो स्पर्म आ गोटे स्पीसीज रो ओवम को रिकॉग्नाइज बा पेनिट्रेट करि परिबो नाही. दिस इज नोन एज गैमेटिक आइसोलेशन. ओके, एटा सी अर्चिन केस रे समुद्र कंटा एटा माने जे कोन से बीच को गले तमे जो माछ धरथांती देखियो पाइबो. एटा को केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर एरिया जो समुद्र अच्छे समुद्र कंटा बोली कहुच्छी सी अर्चिन. ओके, तो सी अर्चिन गोटे स्पीसीज रो सी अर्चिन जेतबे स्पर्म आ गोटे स्पीसीज रो सी अर्चिन एग को कांटेक्ट करछि, इट कैन नॉट पेनिट्रेट बिकॉज़ द स्पर्म विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द ओवम. ओके, so this is the gametic isolation. There is no mechanical and gametic isolation, then only fertilization can happen. Okay, after fertilization there is few post zygotic barrier that prevents a hybrid zygote from developing into viable and fertile adult. So जदि different species रो gamete टा fertilize भी करी गला, different species रो organism रो gamete टा जदि fuse ही गला, then जो organism माने produce हला तारो viability टा कम थी जदि ताहले से सर्वाइव करि परिबनी. reduced viability. Okay, hybrid हमें कहा को कहूछु organism that comes from two different species. एई केस रे इवोल्यूशन पे हमें hybrid कहबा कहा को अलगा अलगा बायोलॉजी रो अलगा अलगा डोमेन रे hybrid शब्द रो मीनिंग अलगा अलगा. हम जेतु इवोल्यूशनरी साइंस पढुछु एटी hybrid शब्द रो अर्थ हला गोटे organism जोटा कि दीटा डिफरेंट स्पीसीज रो आस्ते. Okay, is the product of mating between two different species. So the genes of different parent species may interact in ways that impair the hybrid's development or survival in its environment. जेहेतु parents माने अलगा अलगा species सेमानंगटू हाइब्रिड पाखको जीन आसिला बा अपस्ट्रीम पाखको जीन आसिला, से जीन टा सफिशिएंट होनी टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट. ओके, तो तार वायबिलिटी कम अछि बोली धरा जीवो. सो दैट इज reduced hybrid viability. Then reduced hybrid fertility. जदि सेटा viable भी हेगला से ऑफस्प्रिंग टा डिफरेंट स्पीसीज रो मेटिंग रो प्रोडक्ट हला से हाइब्रिड टा जदि viable भी हेगला बंची गला एनवायरनमेंट रे ताहले से फर्टाइल हे नथिबो, फर्टाइल हे परिबनी. ताको हम कहूछु reduced hybrid fertility. Even if the hybrids are vigorous, they may be sterile.
से निजे आउ रिप्रोड्यूस कर पाइबो नाही माने जीन तार लिनेज टा सेठी बंद हे गेला तो जेतबे हाइब्रिड तयारी होची दीटा स्पीसीज दीटा डिफरेंट स्पीसीज मेट करके जेतबे हाइब्रिड तयारी करचंती ताहले से हाइब्रिड टा स्टेराइल बाहरुची ओके एग्जांपल होची मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स जोटा बाहर तक कहूँ म्यूल एटा हूँ म्यूल मेल डोंकी फीमेल हॉर्स जोटा बाहर म्यूल म्यूल इज स्टेराइल so it cannot further reproduce so आमे जो एटा न्यू स्पीसीज टे कहि तांते as because जो reduced viability and sterility एटा तार लिनेज से तयारी करि परिबो नाही so एटा गुटे सेपरेट स्पीसीज हिसाब रे निज जनरेशन रो बंचुची किंतु तार नेक्स्ट जनरेशन रो तयारी हे परिबो नाही देन आ गुटे होची हमरा हाइब्रिड ब्रेकडाउन ये जो नुआ स्पीसीज तयारी हला ये अल्प समय बंची जदि मरी जाउची देन ताको हम कहूची कोन हाइब्रिड ब्रेकडाउन फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड्स आर वायबल एंड फर्टाइल फर्स्ट जनरेशन वायबल हबो फर्टाइल हबो बट व्हेन दे मेट विथ वन अनदर with either of their parent species or offspring the next generation are feeble or sterile okay so ताको हम कहूछु हाइब्रिड ब्रेकडाउन माने सब्सिक्वेंट स्पीसीज लिने जाउ आसी परिबो नाही हला so that is the hybrid breakdown this is all about your reproductive barriers and species concept okay let me talk a few things more about the natural selection speciation बाबदरे मु टिके कहि दउ चाउ टिके how species forms you get doubt hela feel free to ask questions otherwise you cannot grab this much गोटे क्लास रे बहुत सारा पढ़े को पड़ुची हमें once देखि देले the different types of species concept then we will move how species are formed species केमतिया तयारी होची तो देखो एथरो दी प्रकार वे रे हमें स्पीसीज कंसेप्ट डिवाइड करछु दीटा अलग अलग मेकानिज्म गोटे होची एलोपैट्रिक स्पेसिएशन आ गोटे होची सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन एलोस माने हला अदर पैट्रा माने हला होमलैंड अलगा घर एलोपैट्रिक स्पेसिएशन माने स्पीसीज गोटे रो दीटा हे जिवे जदी अलगा अलगा घरे रहिबा आरंभ कले ओके एटु पिक्चर क्लियर तमे बुझी परिबो जे एटा हला गोटाए पॉन्ड ओके गोटाए पॉन्ड वन काइंड ऑफ स्पीसीज रहउचंदी एटा मूवमेंट हे परछु गोटे पट आ गोटे पट एटी गोटे बैरियर टे अल्पटिक बैरियर अछि बट देयर इज नॉट अ कंप्लीट बैरियर सो मूवमेंट कैन बी अलाउड ओके तो वर्तमान जदि ए बैरियर टा पूरा पानी स्तर पर्यंत ऊपर को अछि हे गला तयारी हे गला देन there will be no movement between these two water bodies and gradually or eventually after 100 of years they will be separated as two different species because anchor gene flow hai paribo nahi there is a physical barrier which prevents reproduction between these two groups of population or fish so this is known as allopatric species eventually the two will become two different species as because of geographical isolation okay this is known as allopatric speciation or sympatric speciation gote jaga re thai ki bi okay a subset of population forms a new species without
geographical isolation. जदि geographical isolation नहीं तथापि भी a subset of the population stop reproducing with other fishes because of many reasons. ताले से दीटा fish अलगा species ହେଇଯିବେ gradually. Okay, तो geographical barrier by data species theory हला it geographical barrier nahi, there is no geographical barrier for the movement तथापि भी दीटा species theory होची ताको हमें sympatric speciation बोली कहूछु हैला तो sympatric speciation रे sympatric syn माने हला together. Okay, patros माने हला homeland. तो कोटे homeland रे दी जण रहुतबे in the same geographical area. तो जदि same geographical area रे रहउचंती तांका भीतर reproductive barrier केमिति तयारी होची हमें बुझी हला अलग अलग geographical barrier जदि रहउतबे तांका भीतर gene flow टा बंद हे जाउची as because they cannot physically meet. When physically meet करि पारु नाहंती ताले it is easy to understand that reproductive barrier develop करूची because they cannot meet and mate तो समय अलग अलग स्पीसीज हे जाउछंती किंतु एई केस रे सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन से माने गोटे जगह रे रहि कि केमिति डेवलप होची तार आंसर हला गोटे हला पोलिप्लॉइडी सेक्सुअल सिलेक्शन एंड हैबिटेट डिफरेंशिएशन पोलिप्लॉइडी सेक्सुअल सिलेक्शन एंड हैबिटेट डिफरेंशिएशन ए तीनटा जिंस पे गोटे जगह रे रहउतले भी से माने अलग अलग स्पीसीज हे पाउछंती पोलिप्लॉइडी माने तुम जानि छ मोनोप्लॉइड पॉलीप्लॉइड माने प्लॉइडी माने केतेटा सेट ऑफ जीन अछि से अनुसार प्लॉइडी कहउछु मोनोप्लॉइडी गोटे सेट ऑफ जीन डिप्लॉइड हम सेट दीटा सेट ऑफ जीन कहउछु ओके प्लॉइडी हला एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम जति एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम डेवलप कर जाउची ड्यू टू म्यूटेशन और एनी अदर कॉज ताले तांको तांको भितर मीटिंग हे पारु नाही so that is known as polyploid. Sexual selection can be the base of allopatric speciation. गोटे जगह रे रही कि अलग अलग स्पीसीज में जदी सम सेक्सुअली सिलेक्ट करबा आरंभ कले जे मु गोटे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म संगे मीट करबी आ बाकी मन संगे करबी नाही so that is sexual selection. Then habitat differentiation माने although same geographical barrier माने there is no geographical barrier तथापि भी सेमान भितरे हैबिटेट जो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लैंड रहउतबे सेमान ता बाहरे सेमान रिप्रोड्यूस करिवे नाही ताको हम कहउछु हैबिटेट डिफरेंशिएशन with a subpopulation exploits a habitat or a resource not used by the parent population तो जदि गोटे जगह रे रहउचंती सेमान को हम पेरेंट पॉपुलेशन बोले कहउछु बट तार भीतर गोटे सबसेट ऑफ पॉपुलेशन कोन करिवे गोटे एमिति जगह एमिति रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करिवे जोटा पेरेंट पॉपुलेशन एक्सप्लॉइट करू नथिबो ताले से माने नुवा जगह को पळे जाउछंती से नुवा जगह रे रहिबा आरंभ कले ताको हम कहउछु हैबिटेट डिफरेंशिएशन ग्रेजुअली से माने अलग स्पीसीज हे जिवे बिकॉज़ माने पेरेंट पॉपुलेशन टू कटि जाउछंती ओके सो दिस इज ऑल अबाउट एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन यदि कहार कोन डाउट रहिला regarding species concept or regarding the speciation allopatric speciation and sympatric speciation please ask few questions अपन 8:44 भी हे गलानी okay so 15 minutes हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन पई रखिबा और इंटरेक्शन जदि क्वेश्चन आंसर नाही सो लेट्स इंटरैक्ट कि कहार कोन जानिबार अछि कोटू यदि मटेरियल असुविधा होची सो यू मे आस्क क्वेश्चंस और एनी क्वेरीज एनीवन Oliva
अनुराधा मु एटा को बहिरु पढौछि हेले पचार क्वेश्चंस न पचारले केमिति जानिबो तमे जो बहिरु अछि इज इट सफिशिएंट कि अलगा मटेरियल दरकार मुआडे गाउथबी तमे जदि बुझु नथियो किछि लाभ नै रे हला अलिभा कोन बुझी हला ना असुविधा हला सर टिके टिके बुझी हां टिके बुझिला असुविधा कोन रहिला पचरनो काई डरुछ पचारे क्वेश्चन ना कोन सर बही केबे आसीबे बही बही थिले जानि बही थिले पाखरे जानि होंता भलरे बही दूर रे अछि ताहेले पाखको आनुन असुविधा कोन होछि काई बही पाखरे नाही सर मटेरियल आसीनी पर्यंत अच्छा तो सुनो बायोलॉजी पिलांको पई मटेरियल रो अभाव नै if you are from biology domain then material रो अभाव नै इंटरनेट क्लिक कले ऑथेंटिक रिसोर्सेस गुडा को पाइबो एबे तो सेंट्रल गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार वेबसाइट्स करके छाडुची ओके एंड हमरो भलो भलो बही गुडा जे बायोलॉजी किछि जानि नथिबो से ता पई भी विभिन्न बुक्स अछि तमे सेगुडा को रेफर कर परियो मु जोटा पढौछि तमको सेटा हला कैम्पबेल बायोलॉजी ओके मु जो थ्रू तमको पढौछि सेटा होछि कैम्पबेल बायोलॉजी प्लीज यार स्क्रीनशॉट नै जाओ ओके एकरु पढिबो इट्स अ वेरी गुड बुक एसी पिलांकर रेफरेंस बुक रे एटा अछि कैम्पबेल बायोलॉजी कांसेप्ट एंड कनेक्शन ओके एटा गोटे बुक ताठु टिके जदी हमें हायर वर्जन बुक को जिबा से कैम्पबेल बायोलॉजी रही कैम्पबेल बायोलॉजी एटा होची इंटरनेशनल एडिशन और ग्लोबल एडिशन भी तमे आनी परियो सो एटा कांसेप्ट एंड कनेक्शन कैम्पबेल बायोलॉजी कांसेप्ट एंड कनेक्शन दिस इज सिंपल कैम्पबेल बायोलॉजी एटा टिके हायर लेवल पिलांक पई ओके एटा पूरा जे बायोलॉजी किछि जन नथिबो से पढिले बहिटा इजीली बुझि परिबो ओके तो दीटा बही इंटरनेट रे अच्छी इंटरनेट रू यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द इंटरनेट आउ किछि क्वेरीज सर कोडा कोडा पढिबो न पूरा टोटल बही तो पढी हेबन ना सुना ना जाउनी सिलेबस सर पर्टिकुलर सिलेबस तो थिबो तो हमको मटेरियल मिलिनी तो कोडा कोडा सेतरु पढिबो सेति हां सेतिरे जोटा तमरो सिलेबस रे जो क्वेश्चंस ता अछि से बहिरु सेटा ही पढिबो एंटायर बही काहे पढिबो सिलेबस सर हम जानिनु सिलेबस जानिनो नो सर त कोऑर्डिनेटर को पचारनो ए जिंसटा न जानले केमति हबो सिलेबस जानिथिबा दरकार मटेरियल जदी आसुनी पचारियो भाई मटेरियल आसीनी असुविधा कोठी रहउची मटेरियल पई कोनोसी माने असुविधा हो नथियो बोली मु भाबुची काहे मटेरियल टा बायोलॉजी रे इंटरनेट रे सब आडे अवेलेबल मु तमको गोटे वेबसाइट कह दूची जेड लाइब्रेरी प्लीज नोट इट जेड लाइब्रेरी ओके यस सर जे कोनोसी बही खोजिबो बायोलॉजी डोमेन रो मोस्ट ऑफ द बुक्स आर अवेलेबल गोटे ग्रेजुएट स्टूडेंट पई जहां भी रेफरेंसेस बुक तमे से जेड लाइब्रेरी रू पाइबो और पीडीएफ ड्राइव आ गोटे वेबसाइट नोट करो पीडीएफ ड्राइव माने गोटा बही खादान गोटा जते खोलिबो सेते बही पाइबो खाली जानिबार अछि जे को बहीटा पढिले टिके भलो कि बुझी होउची को बहीटा कष्ट टिके एतिकी अच्छा जानिले हैला यस सर बायोलॉजी पई तमे जदी पढियाकू चाहुचो ताले बहीर अभाव नाही हैला जेड लाइब्रेरी हैला सपोज कैम्पबेल बायोलॉजी
हारी गला बहिटा एटा रिसेंट एडिशन रो बहिरो लिंक पठे दोछि मु हला प्लीज नोट इट बुझिला तो असुविधा किछि नहीं मटेरियल पय यदि बुझि न पारुछ you should ask few questions हला हम कहिना 1 आवर भितरे एंटायर 4टा यूनिट कवर करवाटा इम्पॉसिबल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सो तमर डाउट्स गुटा पर्टिकुलर यदि डाउट्स गुटा रहउची से गुटा क्लियर कले यू विल बी मोर बेनिफिटेड आउ अनुराधा अरविंद कविता मनोज मीनाक्षी कौन बुझेला न बुझेला किए कोटी चाकरी वाकरी करूछंती हम सुनछु मोस्ट ऑफ ऑल आर टीचर्स आई थिंक सचिन यस सर जॉब करूछ ना कोन करूछ सर डीएलईडी सारी के सर घरे बसिछु रिक्रुटमेंट को वेट करछु अच्छा ओके डीएलईडी हला डिप्लोमा तो हां सर डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन सिटी एजुकेशन अच्छा ओके ओ ठीक अछि आ कोन असुविधा रिगार्डिंग योर syllabus or course यदि असुविधा नहीं we may leave here okay मु तमरा एनरोलमेंट नंबर आपके यदि देइन please send it in the chat box your enrollment number Excuse me, sir. हाँ Sir, if could be good that if you have बड़ prepared पार्टी टिके notes, को then सुना जाउनी if you have prepared the notes, it could be very nice if you give us about these lessons which you are teaching. I do not have notes, but I notes. can actually I do not have notes. Okay, I have directly Yes. taught you from the book. So Yeah, that is very nice. That could, but a little more we that the material is we don't have. That's why we are finding it very most because okay, we that's can't go why through it. okay, Yeah. that's why I have given you the link of a book. Okay, if you Yeah. wish, I can. This is the website. As you can see, this Yes. is Z library. Here you can find most of the material related to your subject. Okay, so you can just go through the content of the book. You can find your material. Okay, these are Yes, very sir. good books, international books which are referred by more than one nation Mm-hmm. and very lucid. As Okay, sir. because these books are pedagogically thoroughly analyzed and reviewed and also peer authored book. You can challenge the money. You can challenge someone on the basis of the information written in these books. Okay, Yeah. Thank you, sir. Yeah. thank you. So material will not help you. I mean, it will help a lot, but if you do not ask doubt, then you cannot grab all the things. So in order, if you are really worried to know the thing, you should go through very good books, and if there is some doubt, you must learn to clear your doubt by asking questions. Okay. How? और आउर सुविधा यदि
you do not know what to refer, which book to refer, just download the CBCS syllabus of the any from a UGC website or college syllabus, state government syllabus. Okay, Odisha state government syllabus जदि भी डाउनलोड कर दउछ तार भितरे बहुत गुटे रेफरेंस बुक्स तमे पाई जिवो इवोल्यूशन पे कोटा रेफर करियार अछि स्पेसिफिक बुक्स गुडा का इवोल्यूशन पे जेनेटिक्स पे स्पेसिफिक बुक्स भी पाई जाउछ एंड मु जोटा तुमको जोटा लिंक दीटा पठली those two books are very good books, they are fundamental biology books सेइतरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इवोल्यूशन तो आरंभ कर बायोस्टैटिस्टिक्स सब जिंस पाउछ ओके वेरी लूसिड लैंग्वेज रे लिखा हिची easy to comprehend हैला so that's all for Yes, today sir. यदि आओ किछि queries अछि तमरो regarding from today's class itself you may ask few questions काहेकि without questions रे मु भाबी जे कहि किछि बुझी पारलो नाही अच्छा समस्त चैट बॉक्स रोल नंबर दे दैछन्ती तो मु रेकॉर्डिंग ऑन कला परे देथिले जे सेटा रेकॉर्ड होची रेकॉर्डिंग ऑन करिया पूर्व जो माने चैट बॉक्स रे रोल नंबर देछन्ती प्लीज राइट योर रोल नंबर अगेन Okay, so that's all for today. Now the class is dismissed.